Okay. How are you everyone? कैसे हो? बढ़िया. Shall we start? Okay. So yesterday we have already completed the schedule one. ठीक है? Schedule one में we are done with part one. हो जाओ भाई. Am I ready? Shall we? Okay. So yesterday we have done the schedule one everyone. Schedule one में we are done with the part one, part two and part three. So total number of clauses 7, 2, 3, 2. So in total 14 clauses we are already done with the part 1 and part 2 में भी I think 4 clauses we are done with. Am I correct? But we are yet to write. ठीक है, पहले अपन थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद एक साथ सारे 10 clauses लिखेंगे. ठीक है. Now first of all तो please tell me what are the 14 clauses in sequence. Part 1 of schedule 1, allowing anybody to practice in your name other than your practicing partner and practicing employee CMA. Am I correct? Second thing, sharing. Third, accepting. Fourth one, partnership. Fifth one, securing which work? Professional work. Sixth one and seventh one. Sixth one is on soliciting the clients. But are you allowed to solicit the work from another practicing CMA? And are you allowed to give the response to the tenders? Yes. But you are not allowed to advertise your professional attainments, clause number 7. You are not allowed to do like photograph on your visiting card, advertisement. और अच्छा एक क्वेश्चन बताना मेरे को ध्यान से सुनना. Say for example, there are two practicing CMAs who are the partner. Am I correct? अब one practicing CMA bought the house and he got the housewarming occasion. तो housewarming occasion में what he did is he sent the invitation to all the clients. Comment. Is he guilty or not guilty? He is guilty. मैं तो बताता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा ये एक्चुअली ना इट्स अ वेरी डिस्प्यूटेड काइंड ऑफ केस. ध्यान से सुनना. हियर हु हैज अ हाउस वार्मिंग पार्टी? वन पार्टनर. सपोज ए पार्टनर एंड बी पार्टनर. ए का हाउस वार्मिंग पार्टी है. A is supposed to send the invitation cards only to his group of clients, not to the group of clients of what? Firm. यहां पे इसलिए ये गिल्टी है. समझ रहे हो? तो यहां पे ये कहां पे गिल्टी है? क्लॉज नंबर 7 and 6 में. इसका मतलब यू आर इनडायरेक्टली स्नैचिंग अवे द क्लाइंट्स ऑफ योर वर्ड पार्टनर एज वेल. तो आप सॉलिसिट कर रहे हो कि मेरे हाउस वार्मिंग पार्टी में आओ, थोड़ा घुलेंगे मिलेंगे और अपने पार्टनर का भी काम तुम ले ले रहे हो. Did you get the point? So these kind of intense questions comes in CA final auditing में तो I have seen, but I don't know about CMA final auditing because as I told you कि that much of detailed thing is not there, but yes something is there. तो clause number 6 and 7 में you have to be super duper careful. याद रखो अगर आपको if you are unable to decide कि should I quote clause 6 or clause 7, I would say that better quote both of them. 6 as well as what? 7. क्योंकि 6 में भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बोला गया और 7 में भी. बट 7 में मेक श्योर दैट इफ द क्वेश्चन कम्स कि यू आर यूजिंग द डेजिग्नेशन टैक्स कंसल्टेंट बिलो योर नेम, देयर इज अ प्रैक्टिसिंग सीएमए यूजिंग द डेजिग्नेशन टैक्स कंसल्टेंट बिलो हिज नेम. गिल्टी और नॉट गिल्टी? आर यू अलाउड टू यूज एनी अदर डेजिग्नेशन अदर देन कॉस्ट अकाउंटेंट? नॉट अलाउड. तो इट मीन्स यू आर गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 7. यहां पे आप 6 कोट नहीं करोगे क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑन व्हाट? डेजिग्नेशन. यू आर यूजिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेजिग्नेशन. अलाउड और नॉट अलाउड? बट आर यू अलाउड टू सफिक्स इट एज एन एमपी एंड एमएलए? यस. तो कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था ये. ठीक है. व्हाट वर द टू क्लॉजेस ऑफ द नेक्स्ट पार्ट? शेयरिंग and accepting. But in case of member in service, what are the three clauses in the part 3? Not a fellow, acting as a fellow. मतलब you are not a fellow practicing CMA, but you are acting as a fellow practicing CMA. You will be guilty. What is the second one? Supplying the information or not supplying? Not supplying the information as requested by any of the 7 authorities. And what is the clause number 3 में? You are guilty because you provided the information under clause 6 and clause 7 knowing it to be false. तो आपने intentional किया. Intentional means fraud. You are guilty under clause 3. And what were the last two clauses? If you were convicted for civil or criminal offense in India or outside India and you were convicted with imprisonment of less than equals to 6 months
And if you are doing any kind of activity which is bringing the disrespect or disrepute to the profession, to the institute, or to the council, so you are guilty under clause 1 and 2 of part 4 of schedule 1. Now, then we entered into schedule 2. Schedule 2 mein I told you there are more strict laws. Why it is more strict? Because here the things are relating to your practice. Point number 1 mein you broke what? Confidentiality. If you remember, point number 1 mein you broke what? Confidence. You are a practicing CMA in company doing the cost audit, and you came across some of the sensitive and confidential information of your client, and without asking the permission of your client, what you did? You disclose it to anyone, or there was no also a question of law. So neither there was a question of law nor there was any prior permission of client, but you still spoke to someone about the confidential information. You will be guilty under 112, right? What is 112? Clause 1 part 1 schedule 2. Is it clear? Now second point में क्या था? You certified or given a report without doing the examination. Neither you examined, nor your partner examined, nor your employee examined, or nor any of the practicing CMA examined. Again, you are guilty under 212. What is 212? Clause 2, part 1, schedule 2. Is it clear? Third clause में हमने क्या किया था? You are vouching the accuracy of the forecast. When you are associated with a project report, should you vouch the accuracy or you should give the assumptions? Basis for assumptions as well as sources of what? Information. But instead of doing that, you are giving what? Vouching for the accuracy. Ki I say that my client will earn in the next 5 years this much. Can you be certain for future or uncertain? Again, you are guilty under 312. What is 312? Clause 3, part 1, schedule 2. Is it clear? And clause 4 may you, your partner or your firm is substantially interested in one company and you expressed an opinion on their what? Cost statements and cost records. So that you should be guilty under 412. Clause 4, part 1, schedule. But I asked you yesterday one more thing. What is a common thing in all these 4 clauses? Gross negligence. मैं तो बताऊं क्यों gross negligence? Actually clause number 7 is on that. Read the 7 first. Due diligence or is grossly negligent in the conduct of his. कभी भी याद रखना, whenever schedule 2 part 1 related question will come, always quote the main clause plus clause 7. Always. I will show you when we'll be reaching to the 10th clause also. Na? I will show you clause 7. You can quote it there also. So let us first proceed with the clause number 5 where we ended up yesterday. What is the clause number 5? Clause 5 और 6 simultaneously पढ़ो. ध्यान से पढ़ना. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Fails to report. Difference number 1. Fails to disclose of which fact? मतलब एक important बात थी लेकिन you did not disclose. Who did not disclose? Member in practice. But यहाँ पे fails to disclose. What is this word? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? मटेरियल फैक्ट का मतलब है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द नेम मीनिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट? बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब है फ्रॉड एंड एरर. मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या हुआ? एम आई सेइंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मटेरियल फैक्ट इन 5? मटेरियल फैक्ट तो मतलब देयर वाज सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू व्हिच यू फेल्ड टू डिस्क्लोज. मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी एफएस में which the auditor, which the member in practice failed to disclose. But in the 6th one, you failed to report a fraud and error. So that is material fact and this is material misstatement. वहां पे failed to disclose, यहाँ पे failed to report. What is failed to disclose? And that too, it was तुम्हें पता था फिर भी तुमने वो चीज नहीं disclose करी. You failed to disclose a material fact known to him. Repeat after me. Failed to disclose material fact known to him in the which statements? Cost or pricing statement which is not disclosed. मतलब तुम्हें पता भी है कि it is not disclosed and it should be disclosed but still you kept what? Silence. So you are guilty or not guilty? Guilty. Under 512. Clause 5 part 1 2. अब बताओ इसको रीड कर लिया हमने ऊपर और नीचे वाला रीड करो. रीड द 5 and 6 now simultaneously बोल. पहले 5 रीड करो. Fails to disclose material fact known to him in a cost or pricing statement which is not disclosed or which is but the disclosure of which is what necessary in making such statement where he is connected with such statement in a which capacity?
मतलब there are so many things you have to understand. Point number one, you fail to disclose. Point number two, what you fail to disclose? Material fact. Point number three, was it known to you? Yes, it was known to you. Was it necessary? Yes, but you disclose or did not disclose? You are guilty under 512. अब नेक्स्ट में क्या है? यू फेल टू नॉट डिस्क्लोज. व्हाट इज द वर्ड रिटन? आपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में एक फ्रॉड एंड एरर के बारे में डिस्क्लोज ही नहीं किया. यू फेल टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. जहां पे भी वर्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट आएगा, ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉड्स एंड एरर्स. नो अगेन व्हाट? नोन टू हिम टू अपीयर इन व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग विच ही इज कंसर्न्ड इन विच कैपेसिटी. तो आप 5 और 6 में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, फेल टू डिस्क्लोज material misstatement. Disclosure report. Report. Fail to disclose material fact known to him. Here also known to me. And in both the cases, you were connected in a which capacity? Professional capacity. अब मेरे को ये बताओ, when you fail to disclose something which you already known to you and you know that it is very important for the fairness of the cost and pricing statement, but you still did not disclose. Are you gross negligent or not? Yes. आप हर जगह फिट करके देखो. इन ऑल द 6 clauses you try to fit the 7th one. Everywhere it will come. And 7th we already know. What is 7th? Gross negligence. You were negligent. Read the 7th one. Does not exercise due diligence का मतलब होता है careful and skillful नहीं था. Or is what? Grossly negligent in the conduct of his which duties? मतलब you are taking the things light. आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था, आपने डिस्क्लोज नहीं करा. आपको रिपोर्ट करना चाहिए था फ्रॉड एंड एरर, आपने रिपोर्ट नहीं करा. आप वाउचिंग ऑफ एक्यूरेसी दे रहे हो एस्टिमेट्स की. विदाउट एग्जामिनिंग यू आर सर्टिफाइंग एंड रिपोर्टिंग. यू आर ब्रेकिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी. यू आर ऑल्सो रिपोर्टिंग ऑन दैट एंटिटी इन विच यू, योर पार्टनर और योर फर्म इज सब्सटेंशियली व्हाट? इंटरेस्टेड. व्हाट इज अ कॉमन थ्रेड इन ऑल 7? ग्रॉस नेग्लिजेंट. यू आर विच नेग्लिजेंट? ग्रॉस नेग्लिजेंट. दिस इज वन ऑफ द ट्रिक कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्लॉज 7 तो डाल के आना. ये बैकअप है तुम्हारा. अगर आपको एग्जैक्ट क्लॉज समझ में नहीं आ रहा ना, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन क्लॉज 7 ब्लाइंडली डाल के आ जाना. नाउ रीड द क्लॉज नंबर 8. अच्छा मेरे को ये बताओ, जब अपन एक ओपिनियन, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मेरे को ये मैडम के बारे में ओपिनियन ड्रॉ करनी है, तो आई शुड हैव एन एविडेंस इन माई पॉकेट, देन ओनली आई कैन से दैट यू आर दिस एंड यू आर दैट. Same case when the auditor expresses the opinion on the cost audit report, he has to have SAAE in his pocket. Sufficient and appropriate audit evidence. अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप ओपिनियन नहीं कर सकते. इसका मतलब here what the auditor is doing, here the member in practice is expressing an opinion, expressing the conclusion, but without obtaining sufficient information and evidence. Read the point number 8. Fails to obtain sufficient information which is necessary for what? Expression of opinion, or its exceptions are sufficiently material to negate the expression of what? Opinion. चाहे आप positive opinion दो, चाहे आप negative opinion दो, you can always have to give the opinion by having what in your pocket? Evidence. Let's say for example, I am giving an opinion that inventory is true and fair. True and fair, I am saying what? Positive. So when can I say that it is true and fair? When I went over there to the godown, I checked the inventory. मैंने physically examine किया उसको, ownership check किया उसका, valuation check किया, existence check किया, disclosure check किया. Then only I can say that inventory is true and fair. It means I got the evidence. Yes, but when you did not check it, how you can say that it is true and fair? It means you are expressing an opinion with evidence or without evidence. Again, what is a common thing? Gross negligence. Common चीज समझ में आ रही है हर एक चीज में. तो अब मेरे को बताओ, पहले में आपने प्रॉब्लम क्या करी? कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर दी. दूसरे में रिपोर्ट और सर्टिफिकेट इशू कर दिया विद एग्जामिनेशन, विदाउट एग्जामिनेशन, ग्रॉस नेग्लिजेंस. तीसरे में यू आर वाउचिंग द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट्स. चौथे में एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ विच इंटरेस्ट? सब्सटेंशियल. पांचवें में you fail to disclose the which facts? Material facts known to you. Sixth में you fail to report material misstatement. Seventh में you are not due diligent, you are negligent. Eighth में without obtaining any sufficient information you are expressing what? Opinion. Ninth में भी पढ़ो, fails to invite attention to any what? Material departure from the what? Generally accepted procedure of costing and pricing applicable to what? Circumstances. अच्छा, let me give you one very simple example.
अच्छा, ये से फॉर एग्जांपल देयर वाज अ बजट of 100 crores. How much was the budget? 100 crore. But you actually spent 120 crores. अब तुम मुझे बताओ, is there a variance? How much is the variance? Is it more than budget or not? अब what is the responsibility of the auditor? What he should tell to his board of directors? कि भैया आपका बजट कितना था? 100 crore और आपने स्पेंड कितना कर दिया? आप ओवर बजट जा रहे हो. Am I correct or not? Do I have to show this? Is this a departure? Yes or no? How much is a departure? 20 crore. Departure का मतलब होता है difference. Do I have to show them the departure what they're doing? अच्छा, what if it is 95 crores? Oh, sorry, here. What if it is actually they have spent 95 crores here? Now tell me, is it within the budget or beyond the budget? Then it is cool. But do I have to mention them the departure or not? But I failed to draw their attention on that. Now tell me, why you have been hired by the company? आपको एक कंपनी हायर क्यों करती है? ताकि आप कंपनी को वो चीजें बताओ, सो दैट यू कैन टेल टू द कंपनी दोज थिंग्स विच द कंपनी इज एबल टू गेट ऑन इट्स ओन और अनेबल टू गेट. हाउ अ सीए और अ सीएमए कैन सी द थिंग्स, वेदर द कंपनी कैन सी द थिंग्स इन द सेम वे? नो. Company is very busy in doing business. They want to know that what are the weaknesses we have, what are the strengths we have, what are the areas where we are going very poor, whether our going concern is good or not. That is the reason they are hiring the auditor. Am I correct? And if you are not doing your work properly, definitely you are what? Gross negligent. Who should tell them that ki, sir, your budget is less but your actuals are more? Auditor. But did you tell? Did you draw their attention? No. Let's say for example, company is having the idle cash of 5 crore rupees. Would you like to verify? Company is claiming that we have an idle cash of what? 5 crores. Would you like to verify its existence? आप कैसे चेक करोगे? फिजिकल काउंटिंग. बैंक स्टेटमेंट नहीं, मैं कैश की बात कर रहा हूं. आप कैश कैसे चेक करोगे मैडम? फिजिकल काउंटिंग. बट यू डिड नॉट डू इट. उन्होंने आपको लॉकर दिखाया, आपने लॉकर देखा, हाँ कैश तो है, बंद कर दिया. डिड यू डू फिजिकल वेरिफिकेशन? जस्ट बाय लुकिंग एट कैन यू से दैट इट इज 5 crores? क्या पता ऊपर के नोट सिर्फ 2000 के ओरिजिनल हो, अंदर के नकली हो सकते हैं, जो मूवीज में होता है. अब मेरे को बताओ, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? एवरीथिंग इज व्हाट? ट्रू एंड फेयर. तो आर यू नेग्लिजेंट अगेन? इट मीन्स यू आर नॉट ब्रिंगिंग द अटेंशन ऑफ द क्लाइंट टू द डिपार्चर्स, टू द नेगेटिव्स व्हाट दे हैव. That is what the clause number 9. Read the clause number 9 again. Fails to invite attention to any material departures. Which departure? Material departure from generally accepted procedure of costing. Generally accepted procedure. अपना GACAP क्या होता है सर? फुल फॉर्म बताना. Generally accepted cost accounting principle. आपको GACAP क्या बोलता है कि whenever you are doing the cost audit, आपको कंपनी का कॉस्ट शीट एनालाइज करना है, ताकि आप कंपनी को ये नोटिस करवा सको कि आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हायर जा रही है या प्राइम कॉस्ट इज हायर. बट नाइदर ऑफ द टू थिंग्स यू आर टेलिंग, बट यू आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर. तो आर यू फॉलोइंग GACAP और यू आर नॉट फॉलोइंग GACAP? तो यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर 912. बट इज 912 क्लॉज 9 पार्ट 1 शेड्यूल 2. इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आएगा? तो मेरे को 1 to 9 क्लॉजेस सीक्वेंस में बताओ. फर्स्ट वन में यू ब्रोक व्हाट? कॉन्फिडेंशियली. सेकंड में यू सर्टिफाइड एंड रिपोर्टेड विदाउट एग्जामिनेशन. थर्ड में यू आर फॉरकास्टिंग, यू आर वाउचिंग द फॉरकास्ट. फोर्थ में यू आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द एंटिटी वेयर यू आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. फिफ्थ में यू फेल टू रिपोर्ट, फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स विच वर नोन टू यू. एंड सिक्स्थ में यू फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगेन विच वर नोन टू यू. सेवंथ में यू आर अ ग्रॉस नेग्लिजेंट. एट्थ में यू आर नॉट obtaining sufficient and appropriate information which is very much required for expressing an opinion. Ninth में you are not inviting the attention to the material departure from GACAPs. जो आपको करना चाहिए था वो नहीं किया. और 10th में क्या है? अब सुनना ध्यान से. Client gave you some money. अब मान लो मेरा एक क्लाइंट है, उसको GST का 25 lakhs का पेमेंट करना है, एंड क्लाइंट को इमरजेंसी में यूएस जाना पड़ा. उसने मेरे को क्या दिया? पैसे दिए. उसने बोला रोहित सर ये आप 25 lakhs रखो, नेक्स्ट वीक अपनी पेमेंट है, आप प्लीज जाके GST डिपार्टमेंट कर देना. दिस काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यू हैव बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट. बट तुमने क्या किया? वो पैसे को अपने अकाउंट में रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
अगर शॉर्ट ड्यूरेशन पेमेंट है तो यू कैन कीप द क्लाइंट्स मनी इन योर ओन अकाउंट. But let's say, for example, this payment is after 6 months. For the 6 months, if you are keeping your client's money in your bank account, is it guilty or not guilty? Guilty. If the duration of the payment and the handing over the cash time is a longer period of time, you should have opened a separate bank account to keep the whose money? Client's money. क्योंकि याद रखना सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है. इसका मतलब आप क्लाइंट के पैसे के ऊपर क्या खा रहे हो? इंटरेस्ट. समझ रहे हो? अगर तो शॉर्ट ड्यूरेशन पेमेंट्स हैं या आपकी एडवांस ऑडिट फीस की पेमेंट है तब यू आर नॉट गिल्टी. बट इफ यू आर नॉट कीपिंग द क्लाइंट्स मनी इन अ विच अकाउंट? सेपरेट बैंक अकाउंट. यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर 10(1)(2). Clause 10, Part 1, Schedule 2. Now read this. Fails to keep monies of his client other than fees or rev. अगर ये मेरी एडवांस ऑडिट फीस है, सपोज मेरा क्लाइंट मेरे को बोल के सर सितंबर मंथ में आई विल नॉट बी अवेलेबल, तो अप्रैल में ही आप ये एडवांस रख लो, जनवरी में एडवांस देके चले गए. अब मेरे को बताओ, इज इट हिज मनी और माई मनी? माई मनी आई कैन कीप इट, बट इफ इट इज व्हाट? हिज मनी. फेल्स टू कीप द मनीज ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन व्हाट? फीस एंड रेम्युनरेशन. मतलब फीस एंड रेम्युनरेशन आई कैन कीप, और मनी इज मेंट टू बी व्हाट? Expended in a which time? Separate bank account, or to use such money for the purpose which they are intended within a which time? Reasonable time. अगर 7 days के अंदर पेमेंट करनी है, obviously you will not open a separate bank account. 7-8 days, चलो 1 month तक आप अपने अकाउंट में रख सकते हो, लेकिन पेमेंट करना है 7-8 months के बाद, and you are keeping the money in your account, तो almost for half an year you only earned the interest on 25 lakhs. It means, are you making the utilization or misutilization? तो you are guilty under 10(1)(2). Did you get the point? और इसके साथ क्लॉज नंबर क्या आएगा? 10 and 7. तो 1 and 7, 2 and 7, 3 and 7, 4 and 7, 5 and 7, 6 and 7, 7 is 7, 8 and 7, 9 and 7, 10 and 7. तो और ऑब्जर्व करो, all the 10 clauses are connected to your practice. Gross negligence and connected to your what? Practice. Did you get the point? अब मेरे को 10 क्लॉजेस और 10-1 रिवर्स में. यू फेल टू कीप द क्लाइंट्स मनी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. सेकेंड, 9th, you failed to drive the attention, failed to invite the attention on material departures from the GACAP. Always remember the keyword as you said GACAPs. Okay, point number 8. Without obtaining SAAE, you expressed what? Opinion. Without information, you express what? Conclusions and opinions. 7. Gross negligence. 6. Fail to report material misstatement. 5. Fail to report material facts. 4. Expressing an opinion on substantially interested entity. 3rd. Vouching accuracy on forecast. 2. Reported and certified without examining. And first one, broke the confidence. अब हो गए अपने 14 + 10, 24 क्लॉजेस हो गए. टोटल कितने हैं अपने को? तो अब करते हैं नेक्स्ट 4. देखो, ध्यान से देखना, मेरे को ये बताना, व्हाट वाज क्लॉज नंबर 2 of part 4 of schedule 1. Please tell me what we have noted. Bringing disrespect. अब सुनना ध्यान से, ये वाला जो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 2 है, पहले तो पढ़ो क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू, मतलब ये दोनों के लिए MIP एज वेल एज MIS. नाउ लिसन, व्हाट इज दिस रिटन? कॉन्ट्रवेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी ऑफ द रेगुलेशन और अंडर गाइडलाइंस इश्यूड बाय काउंसिल. ये एक्ट में वंस दिस क्लॉजेस विल बी ओवर, वी विल डू सम सेक्शंस, जैसे penalty sections will do, let's say membership sections we do. If you are doing any violation of this act, which act? Cost and Work Accountants Act. What is the name of the act? Or if you are going against the guidelines, जैसे guidelines है कि you cannot keep a dummy articles, और आपने एक dummy articles रख लिया. Are you getting the point? What do you mean by dummy articles? He registered but not coming to your office. So in that case, are you following the rules and regulations and guidelines, or you are against it? You are guilty of what? Professional misconduct under 212. Sorry, 122. 122.
Clause 1, Part 2, Schedule 2. So what is a Clause 1, Part 2, Schedule 2? Contravenes any provisions and any regulations made thereunder or any, अगर आपने गाइडलाइंस को वायलेट किया, रेगुलेशंस को वायलेट किया या सेक्शंस को वायलेट किया तो यू आर गिल्टी अंडर 122. डिड यू गेट द पॉइंट? नेक्स्ट, अब मेरे को ये बताओ, व्हाट वाज क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2? अभी हमने किया क्लॉज 1 of part 1 of schedule 2. Confidential. Who broke it? Members in practice. Here, who is breaking it? Member in survey. Breaking whose confidentiality? Employer's confidentiality. वहां पे client's confidentiality. अब पढ़ो ये पूरा point. Read the point. Second point. Being an employee of the company discloses confidential information acquired in the course of his employment. वहां पे लिखा था being an what is a professional disclose the confidential information acquired during the course of professional work. तो वो member in practice का था, ये member in survey. Points are same. Breaking the confidentiality, breaking the confidence. तो you are guilty under 222. What is 222? Clause 2, part 2, schedule 2. Clear है? तो what is clause 1? Violating provision, violating regulation, violating guideline. Clause 2, breaking confidentiality by MIS. And if it is a confidentiality broken by MIP, तो 112. What is 112? Clause 1, part 1, schedule 2. What is the third clause? अब सुना ध्यान से. Please tell me, go to the third part of schedule 3 and second clause. Go to the 231. Not providing the which information? Supplying the information which is asked by any of the 7 institute. Suno, here you are providing the information knowing it to be false. Rest everything is same. Here you are providing the information. What is the difference between this clause and this clause? See, there, what was the clause? You are failing to provide the or failing to supply the information. तो आप information दे ही नहीं रहे थे, but here you are giving, but knowing it to be false. Read this point. Third point, includes in any information statement return form to be submitted to all the 7 parties. Read the parties: institute, council, committees, directorate, discipline, BOD, disciplinary committee, or quality review board, or any particulars knowing them to be what? False. Please tell me what is this clause and that clause में difference. There you fail to provide information. Here you are providing the information but knowing it to be false. Did you get the point? अब बताओ, what was the comparison of? Is there any similarity of 2 of this part and 1 of previous part? What is 2 of this part? Confidentiality. Who is breaking it? MIS. What is 1 of previous part? Confidentiality. Who is breaking it? MIP. What is 3 of this part? Supplying the information to the institute but knowing it to be false. What is the 2 of part 3 of schedule 1? Not providing the information. अच्छा, what is the 10th of part 1 of schedule 2? अब ऐसे ही पूछा जाएगा. 10th of part 1 of schedule 2 fails to keep the money in a which account? यहां पे you embezzled the money of your client. मतलब आपने उसके क्लाइंट के पैसे को मिसयूज किया. Read this point. Defalcates or embezzles the money received in your which capacity? यहां तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, यहां आपके क्लाइंट ने आपको पैसे दिए थे, आपने अपनी खुद की लोन की EMI पे कर दी. तो you used it or misused it? It means you are guilty of embezzlement and defalcation under 422. What is 422? Clause 4, part 2, and last clause you already know in the part 3. Imprisonment for greater than how many months? 6 months. वहां पे क्या था? Other misconduct less than equals to 6 months. Here what is? 29 clauses. Fingertips पे 29 से 1 पढ़ोगे या 1 से 29 पढ़ोगे? पहले 1 से 29, फिर 29 से 1, फिर अपन प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट. 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1. बस वहां से स्टार्ट हो जाओ. पहले क्या था? अलाउइंग, शेयरिंग, accepting, partnership, securing, solicitation,
advertisement, sharing and accepting for member in service. फिर not a fellow, acting as a fellow, not supplying the information. Third, you are using 6 and 7 information but knowing it to be false, you are giving it wrong information. Next point, civil or criminal liability penalized for less than equals to 6 months and doing anything which is bringing disrespect to the profession. All 14 are over. Let's proceed with the part 1 of schedule 2. First one, broke the confidentiality. Second one, reported and certified without examination. Third one, vouching the accuracy of estimates. Fourth one, expressing opinion on substantially interested entity. Fifth one, fails to disclose material facts. Sixth one, fails to report material misstatement. Seventh one, gross negligent. Eighth one, failed to obtain sufficient and appropriate audit evidence. What is the ninth one? You forgot to, अरे बोलो अच्छे से बोलो, forgot to draw the attention of material departure from GA CAP. And 10th one, fails to keep the client's money other than your fees and remuneration in a separate bank account. फिर next में part 2 में क्या आया? Point number, if you are violating any section, guideline or regulation. Clause 1. Clause 2, breaking confidentiality but by member in service. Third, supplying the information but knowing it to be false. And fourth one, defalcates and embezzles the money received in the which capacity? Professional capacity. And last but not the least, civil or criminal penalty where imprisonment is exceeding 6 months. Did you get the point? So this was all clause number 1 to 20. अब मैं jumbled में पूछ रहा हूँ. What is clause 2 of part 3 of schedule 1? Clause 2 of part 3 of schedule 1. हाँ, सुनो पहले ध्यान से सुनो, डोंट जंप टू द कंक्लूजन. यहां पे रेस नहीं चली. क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 1, नॉट सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन, नॉट रिसीविंग वाला, शेयरिंग वाला नहीं है. ओके, क्लॉज नंबर 6 ऑफ पार्ट 1 शेड्यूल 1, सॉलिसिटेशन. क्लॉज नंबर 7 ऑफ पार्ट 1 शेड्यूल 2, पहले बोलने दो. जंपिंग, प्री मैच्योर इवेल्युएटर. Clause number 7 of part 1 schedule 2. Clause number 9 of part 1 of schedule. Obviously 9 और किसी में है ही नहीं. Clause number 9 of part 1 of schedule 2. हाँ, अभी हमने किया GA CAP. Clause number 3 of part 2 of schedule 2. हाँ हाँ, सुना लग रहा. हाँ, सोचो सोचो. क्लॉज नंबर 3 पार्ट 2 शेड्यूल 2. नो सर, क्या है सर? मैं बोल रहा हूं है माते है. क्लॉज 2, क्लॉज 3 पार्ट 2 शेड्यूल 2, सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन बट नोइंग इट टू बी फॉल्स. क्लॉज 2 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2. क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, providing or breaking confidentiality by members in service. Clause 4 of part 1 of schedule 1, partnership. Clause 1 of part 3 of schedule 1, not a fellow, acting as a fellow. समझ में आ गया? टोटल हाउ मेनी क्लॉजेस? 29. जल्दी से लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं. तो अप टू पार्ट 4 वी हैव नोटेड. चलो, लेट्स प्रोसीड विद द शेड्यूल नंबर 3. 2 सॉरी, शेड्यूल 3 है ही नहीं. पार्ट 1, प्रोफेशनल misconduct in relation to members in practice. So clause 1, discloses confidential
information acquired during his professional capacity without any client's permission, any obligation of law. So if you disclose the confidential information which you acquired during your professional capacity without any client's permission or any obligation of law. और एक में ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो यहाँ पे, अगर किसी केस में आपको जेल जाना पड़े